We were discussing the different types of welding processes. Previously, we have done for arc welding, we have done 4 welding processes: SMAW, GMAW, GTAW, and SAW, submerged arc welding process. Other than that, we have also done resistance welding and gas welding, but resistance welding and gas welding we won't be discussing at all, not part of this syllabus. But SMAW, GMAW, TIG, and SAW, these are part of syllabus for this advanced welding techniques. So we'll discuss these things a little in a little, not much in detail. Okay, so SMAW, as we know, SMAW is the most common variant of the welding process. SMAW is an acronym. SMAW is an abbreviation for shielded metal arc welding, SMAW. This is also called as roadside welding process. This is the cheapest variant which is available for arc welding. You could have seen, I'm pretty sure you could have seen SMAW happening at one place or the other. And in your workshop course, you could have done manual welding also. This SMAW you could have done also. So it is a very basic setup. It consists of an electrode. On the electrode is fixed on an electrode holder. Electrode holder is connected to power supply, right? The workpiece is kept on a metal plate, and that metal plate is also connected to the power supply. So we can control what sort of supply is to be given to the electrode and what power supply is to be given to the workpiece. Most of the times we work with straight polarity and reverse polarity we have discussed previously. Okay, other accessories, welding table should be there, which is very important. Specifically in a workshop or in a lab scenario, welding table is required. Workpiece connection, clamping should be there, lead cable should be there. Then power source should be able to supply whatever voltage and whatever current is required, that should be supplied. And power source is being plugged to the power, the welding power source is being plugged to the main power source also. These are extra things. So this portion is the most important portion for SMAW: electrode holder, electrode, and the workpiece. And then the connections we can figure out ourselves. We can do it as per our own requirement. Okay, regarding electrode, we have discussed a bit in detail. Previously, MEC 402, we have discussed regarding electrodes. We'll be discussing it more in detail. The electrode nomenclature specifically, we'll be discussing it in complete detail. And then electrode components, the types of electrodes, these things we'll discuss. So I'm not going into it now. Power source we have covered previously. So this is all for SMAW. If any doubts are there, of course, you can ask me if any questions are there. I'll move on to GMAW. GMAW stands for gas metal arc welding. GMAW is also called as MIG welding, which is MIG means metal inert gas welding. As I told you, there is which is called as metal active gas welding. The only difference is in metal inert gas welding, the shielding gases which are used, they are of inert nature. And in case of active gas welding, we use carbon dioxide. Why carbon dioxide? It is quite cheaper and easily available, can be used. That's why CO2 welding, also called as metal active gas welding or CO2 welding, right? So GMAW, the main component of a GMAW is the welding gun. Welding gun has connections to a power source. The power source here performs a lot of functions. It provides the polarity, means the workpiece positive or workpiece negative, what sort of polarity you want, the power source will give that. Other than that, the power source has a opening for putting the wire spool. GMAW, as you know, GMAW is a continuous welding process. In case of SMAW, we have electrode. So once the electrode is consumed, we take it out. The stub of the electrode, we take it out, and then we put another electrode in its place. But GMAW is a continuous welding process. Here we take a wire spool, and the wire from the wire spool is fed. One time effort is required. You put the wire spool in its place. You take out the wire, you push it through the roller inside the welding gun, and then you start welding. So wire spool is quite big. You can do maybe 5-6 kilometers of welding using a single wire spool. Of course, we don't do 5-6 kilometers at one stretch, but just the specification. If you go to purchase a wire spool from the market, they will ask how big a wire spool you want. That time you'll have to say that maybe 1 kilometer spool or 10 kilometer spool, like that. Okay, so the feeding of the wire is also taken care by the power source.
Other than that, the shielding gases, as the name gas metal arc welding or metal inert gas welding, shielding gas is used. So shielding gas supply is also controlled by the power source. So in case of GMAW, the choosing the correct power source is of utmost importance. You have to choose a correct power source so that all the requirements are taken care of. So we'll see one by one. This is the welding gun. Welding gun is connected to the power source, and internally the welding wire. This is the wire spool. This cylindrical element is known as wire spool. On that, the wire has been spooled. It is very similar to the kite. You could have flown some kites. So the wire of the kite is wound around a cylindrical element. Similarly, this welding wire is wound around a cylindrical element. It's called as wire spool. Wire from the wire spool is fed into the wire guide. From the wire guide, it moves into the roller. Internally, it is there. Feed rolls, we call it as feed roll. These feed rolls, it pushes the wire inside the this welding gun cable, and then through the welding gun, it comes out. So welding gun, it has a switch. When you press the switch, the rollers are activated. It continuously pushes the wire outside. It also switches on the gas supply. So this is the cylinder for the shielding gas. As you know, shielding gases can be helium, argon, or a mixture of helium or argon. Or if it is a mag welding, it can be CO2 also. So cylinder, it has a safety net so that the gas does not comes out. Then it has a flow meter where you can find out how much gas is flowing inside. Normally 8 to 10 liters per minute is considered as good flow rate if you are doing indoor welding. If you are doing outdoor welding, GMAW, you have to go for higher gas flow rate because outside the air drafts and all are quite high. So if you do not use a higher gas flow, then contaminants may come in, right? So this is the power source, power supply. Power supply has an outlet for polarity to the welding gun. It is an outlet for polarity to the base plate. Here the workpiece is not shown, but through this ground clamp, the power supply is the polarity is given to the workpiece, right? Grounding is also done through this machine only, the power supply only. It has a feed for gas hose, means the shielding gas also it supplies, and it of course supplies the wire spool. So this is the generic setup for the GMAW. Now this is the wire feed mechanism. Wire feed mechanism, this is the much detailed view of the how the wire is being fed. So we have a wire reel, which is also called as wire spool, wire reel, right? From the wire reel, a wire is taken out. That wire is fed inside the wire guide. So wire guide has a motor which can pull in the wire, and then through the wire feed rolls, this wire is pushed out and it is fed into the wire feed and the power cable. And from here it continues to the welding gun, right? So this is the welding gun. So what the view in this slide, it corresponds to this area. I hope you can see whatever I'm moving on the PPT, otherwise it won't make any sense. But this area view is being exploded over here. So this is the wire reel. Wire comes out through the wire guide, which has a motor. It pushes the wire inside this guide rolls. Guide roll can have a gearbox also. If you want to have a variable speed, you can have a gearbox. But gearbox is for high-end system. Most of the time, GMAW won't have a gearbox. So when you press the switch, the wire will come out. Right. So this is the wire feed mechanism. This is the welding gun. So from the wire feed mechanism and the power cable, those things will come from here. And through these things, the gun housing, this is the main thing, the trigger. When you press the trigger, the wire rolls are activated, the wire will be fed. The welding, the inert gas feed, that will be activated. So the gas feed will come, right? And then these are the internal details of the MIG equipment. If you see a MIG welding torch, there you will find, when you open the torch, you will find these kind of details are there, right? Contact tip is for providing the electrical connection till the last point. At this point, the wire comes out from the contact tip. So till here, the electrical connection is provided. And this nozzle, this is an important element. Nozzle is put over this, sort of acts like a cap. Nozzle is put over this gas diffuser and the contact tip. Why? Because GMAW, if the parameters are not correct, and even if the parameters are correct, it is a very violent welding process. All welding processes are violent. But GMAW, since shielding gas is coming at a high velocity and the molten wire can fly anywhere, so
if the nozzle is not there, this contact tip will be damaged very soon. Contact tips are costly. Nozzles are also costly, but not that much. Contact tips are very costly, and replacing the contact tip is again very difficult. Nozzles normally they are made up of ceramic, silicon nitride nozzles are there, so they can be easily procured, and just a thread is there, so you can just rotate and take it off, and then rotate and put it in. That's all. So this is the sort of detailed view of the welding gun, which is used for your GMAW welding process. GMAW welding, most of the times it is an automated welding process. So manually, very rare occurrence is there that we do it manually. Most of the times, whenever we talk about automated welding process or robotic welding process, most of the times we'll be talking about GMAW. So you can realize why GMAW, because GMAW is a continuous welding process. Once you feed the wire, then you are set for 5 kilometers or 10 kilometers of welding. So otherwise, if you want to automate a SMAW welding process, it is very difficult. It can do the welding for the length of that electrode. Length of the electrode is maybe what, 40 to 50 centimeters at max. So after 50 centimeter, again the robot will stop. Ideally, it will stop. Then it will give a signal that change the electrode. Worst case, the robot won't stop. It will continue moving without doing welding. So that is very difficult, right? So in case of robotic welding, or automated welding, we need a continuous supply. That's why GMAW is a good candidate for that. Okay, next up is GTAW. GTAW, as we all know, is the another variant of inert gas welding known as tungsten inert gas welding. Tungsten is specified because in case of GTAW, the electrode which is used is non-consumable in nature, and the electrode is made up of tungsten. Why tungsten? It has a longer life, and it has good emission characteristic. So this we have seen that tungsten, using a tungsten electrode, starting the arc is easier. So now if you can correlate, I have told that in case of electrode, while preparing the electrodes, if you add TiO2, titanium oxide, there the emission characteristics of titanium oxide is very good. And here tungsten, so emission characteristics of tungsten is also very good. So tungsten is good for starting the arc, and titanium oxide, rutile, TiO2, that is good for maintaining the arc. So this you should remember. If anyone asks you that we have to do a welding, but starting the arc is very difficult, how can we address it? So you can suggest you go for tungsten electrode. You go for tungsten electrode. In more difficult cases, even if tungsten also is not sufficient, then you can say go for thoriated tungsten. So thoriated tungsten electrode, those have very good emission characteristic. They can start an arc very easily. And if you use a TiO2 flux, of course with GTAW flux we don't use, but if you want to supply external flux in rare cases, special welding cases, so TiO2 can maintain the arc very easily. Okay, so GTAW, gas tungsten arc welding, it has following elements. Of course, it has a power supply. Inside the power supply, we feed the shielding gas. So shielding gas is also fed through the power supply. Power supply provides the electrical connections to the electrode and to the base metal. GTAW using the filler metal is optional, and it is recommended also because GTAW is done for thinner plates. So most of the times the bead which is obtained with GTAW is not very reinforced. The reinforcement of the bead is not there. So maybe sometimes it may become weak in operation also. So using a filler rod is highly recommended. Of course, while using the filler rod, you should be very careful to move the filler rod continuously with the torch. If the filler rod by chance sticks with the welding electrode, then the process will stop. And then removing that that filler rod is very difficult. Most of the times the filler rod is also tungsten only. So if the tungsten filler rod sticks with the tungsten electrode on top of the workpiece, then removing these three things is very difficult. You have to switch off the power supply, then you have to remove the workpiece first. Workpiece most of the times can be easily removed, but removing the tungsten filler from the tungsten electrode, most of the times the electrode is damaged. So after removing, you have to take out the electrode and you have to go for grinding of the electrode, so that again you can have a pointed edge, so that again you can have a good arc starting, and then you have to continue the process. But in the whole all this time, the time is lost, and as we know, time is money.
and money is very much required for all. So we have to try and avoid all these things. So GTAW, this is another image, because this is an online class, so I can show you lots of images. So this is another image. The reference is given at the bottom. So similar sort of thing. A GTAW head is there. Supply for power, supply for shielding gas is there. This is the contact tube on which the tungsten electrode is fixed. Right. The whatever polarity is coming, that polarity is given to the contact tube. And since the tungsten electrode is passing through the contact tube, it is having the same polarity. So tungsten electrode non-consumable in nature. This is the weld bead which is being deposited. Here this is an electrical arc, bluish in color. Most of the times it is bluish in color, bluish whitish, right? And the shielding gas is coming, so it is giving a pink type of color. Okay, this is the filler rod if you are using a filler rod. So the thumb rule for using a filler rod is the filler rod should be at the edge of the plasma, edge of the arc, whatever arc has been struck between the tungsten electrode and the weld bead. So the filler rod should be at the edge of that. If the filler rod is inside the arc, directly below this tungsten electrode, chances are there that it will stick. And if the filler rod is outside the arc, completely outside the arc, then the filler rod may not melt also, may not melt in a proper fashion, and then using the filler rod does not give any benefit. So the filler rod should be kept at the edge of the arc, and the person who is doing it, he should have very steady hand. His hand should not shake. That's why welding, I told you also, no, welding, it is a high paying job. If you are a good welder, you can earn lots of money. Okay. So then copper shoe optional. This is sort of a backing plate. A backing plate, we know sometimes if it's a very thin plates are there, you cannot weld it directly on table, because then they may distort or they may move here and there. They may not be stable or steady. So we put a copper shoe below them so that they can be held at one place. This is the direction of the weld and shielding is applied. Nothing much. Okay. Next up, we have SAW. This was the last arc welding process which you have seen. SAW, as the name, as you know, SAW is for submerged arc welding. So submerged arc welding is another arc welding process in which the arc is struck between a continuously feed electrode wire. So the electrode in case of SAW is a consumable electrode and it is continuously fed. So continuously fed electrode means there is definitely a wire spool similar to that of GMAW. But in case of SAW, the wire diameter is a bit higher, right? So the wire is fed from the wire spool through the contact tube, and then it comes out and the arc is struck. And the arc is throughout kept inside a layer of flux, so that the arc has a deeper penetration. So SAW can be used for welding of thicker plates. The heat is concentrated inside the weld bead for longer duration. So the cooling rate in case of SAW is lower. So SAW, the toughness of the joint is not that much. The grain size in case of SAW is sort of high. So in case of SAW, if you want smaller grain size or higher toughness, then you have to introduce some artificial cooling. So you have to flow water through the area or some other coolant you should use, right? So this is the schematic of SAW. So there is an welding wire. There are two base metal. So here this is the weld metal which has been deposited, and solid slag. Slag is the molten flux which floats on top of the weld bead. Solid slag is there. This is automatic wire feed. As I told you, SAW is a continuous wire welding process. So the wire is continuously fed from the rollers, and then the arc is established. Arc is always under a layer of flux. The flux comes from the flux hopper. There is a container sort of thing which moves alongside the welding head, and it continuously supplies the flux. So SAW can be done in two ways. Either initially you completely deposit a layer of flux over the area where the welding has to be done. So suppose welding is to be done on this line. So initially you deposit a complete layer of flux throughout this line, and then you start the welding. In that case, you don't need a flux hopper because you've already deposited the flux, right? Second way of doing submerged arc welding, that you do not deposit any flux. You just take a flux hopper and take a supply from the flux hopper. Sort of pipe, metal pipe is there from the flux hopper. You attach it to the welding head, and then when the welding arc starts, you open the flux hopper, the flux will start flowing, and then the welding continues, and SAW you can have.
Okay, so here you can see a comparison has been given between the deposition rate which is obtained in case of SAW. So as you see, as we move from single wire to twin arc to tandem twin and multi arc, the deposition rates keeps on increasing. So this is the single wire. This is the basic welding which we have seen. Long stick out means the electrode which is coming out from the contact tube is higher in length. Single wire SAW means the stick out is normal, stick out is small. Suppose stick out is 3 mm or 4 mm. In case of a longer stick out, it is 7 to 8 mm. Means more of the wire is exposed outside the contact tube. So more of the wire is melting. That's why more of deposition is taking place. Tiny twin arc means there is a single wire, but the wire diameter is very large. And on the single wire, two arcs are being formed. So we call it as twin arc. Tandem arc means there are two wires and the two wires are forming two arcs. So you should know the difference. Twin arc means single wire but two arcs are forming. Tandem arc means two wires, two arcs, right? Tandem twin means we have two wires. One wire is forming one arc and the another wire is forming two arcs. So this is a combination of twin as well as tandem. We call it as tandem twin. Okay, then multi-arc means there may be so many wires, and whether it is a twin arc or tandem arc, we don't care. So many wires are there, and deposition rate is very, very high in case of multi-arc SAW. Right, so these are the different variants of SAW. Not that much focus I want to give on variants. Just I want to tell you that if you want to improve the deposition rate, these are the options available. So you can go for a single wire, or you want a slightly higher deposition rate, you increase the stick out. How do you increase the stick out? You put the wire feed on for some time before starting the arc, right? So the wire will stick out and then you lift up the welding head. So from here you can see you have to lift it up and then you have to feed the wire so that more wire will be exposed, and then therefore more wire will melt and more deposition will be there. Tiny twin arc, you use a bigger diameter wire and from the single wire two arcs will be formed. Tandem arc means you are using two wires being fed from two different nozzles, and from the two wire you have developed two arcs called as tandem arc. Tandem twin means one wire will be having two arc and one wire will be having a single arc. So tandem twin. And multi arc means so many wires, so many arcs. Don't care what is happening. Okay, so these are the different variants of the arc welding processes. So only this much I want to cover for the recap. I won't be revising the gas welding and the resistance welding processes or the weld metallurgy, because weld metallurgy we will be covering in some detail. HAZ and those things we'll be doing. So I don't want to go into it right now. So if any doubts are there, now you can ask. So we'll have the doubt clearing and then we'll see. Yeah. Sir. Bolo Sandeepan. Yes, sir. I was saying that in SAW, as the flux is being fed, तो वहाँ क्या सर वो जो वेल्ड पूल में वो फ्लक्स तो जम जाएगा ना, तो इससे तो डिफेक्ट हो जाएगा. अरे फ्लक्स का नेचर है ना, जो फ्लक्स जब डिजाइन करते हैं हम फ्लक्स को, so we design the flux in a manner that the density of the flux should always be less than the density of the molten weld pool. So the flux will always float on top of the molten weld pool. That's why it won't be like getting inside the molten weld pool. It will always float above. और सर लॉन्ग स्टिक आउट वाला ये इसमें क्या फायदा हो रहा है सिंगल वायर्स के कंपैरिजन? लॉन्ग स्टिक आउट मतलब सपोज तुमको एक जॉइंट बनाना है और तुम्हारे पास जो प्लेट है वो 10 mm का है, ठीक है? 10 mm का एक प्लेट है, 10 mm का दूसरा प्लेट है, दोनों के बीच में तुमको एक बट जॉइंट बनाना है सपोज. तो तुमने एक सिंगल वायर वेल्डिंग किया, SAW, you went for single wire SAW welding and you did the deposition. You saw that the deposition is taking 10 minutes. For example, it may take more or less. I am not talking about standard. Suppose it is taking 10 minutes. But now you want to weld 10 millimeter plates, but you want to do it more quickly. You don't want to wait for 10 minutes. You want to do it maybe within 7 minutes or 5 minutes. So what you can do, you can increase the stick out. Stick out means the portion of the welding wire which is outside the contact tube. So if you increase the stick out, so more with the increased stick out,
more portion of the welding wire will be getting heated. Therefore, more portion of the welding wire will be getting melted. Therefore, more portion of the welding wire will be deposited inside the bead. Therefore, your welding deposition rate will be higher, and then thus you can have the weld bead within a lesser duration. पहले जो तो काम 10 मिनट में कर रहे थे, अभी ज्यादा वायर बाहर निकला हुआ है, ज्यादा गर्म हो रहा है, ज्यादा मेल्ट हो रहा है, ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, इस वजह से वो जल्दी हो जाएगा. ये है स्टिक आउट का मतलब स्टिक आउट का फायदा. Yes, sir. So what is the function of the flux in SAW? Function of the flux in SAW is quite similar to that of function of flux in SMAW. First thing, the flux prevents the contamination from atmosphere. Second thing, the flux helps to retain the heat inside the weld bead so that deeper penetration can be achieved. Next, the flux reduces the rate of cooling of the weld bead. Therefore, chances of cracking are lesser in case of SAW. Also, the welding arc is continuously inside the layer of flux. Therefore, you do not need to use eye protection. You don't have to shield, or you don't have to use goggles and all, because the welding arc is continuous throughout the time it is inside the layer of flux. And what are the components in the flux? Submerged arc welding flux may be of two types: agglomerated flux and fused flux. And most of the time, compounds of silicates, sodium silicate or potassium silicates are there. These things I have given you in notes also. I don't all the components, but this you can see in the notes. Definitely it will be there. Fluxes are of two types: agglomerated type and fused flux types. Most of the times they are compounds of silicates. Okay, sir. Sir, we also use silicates as the binders, sir. So what is the difference between a flux and a binder? अरे बाइंडर एक फ्लक्स का एक पार्ट है बे. फ्लक्स और बाइंडर में क्या डिफरेंस है? बाइंडर इज अ कंपोनेंट ऑफ द फ्लक्स. फ्लक्स बनाने के लिए ऐसा तो नहीं ना कि सोडियम सिलिकेट डाल दिया और उसी को हम उसमें वहां पे यूज कर लेंगे. सोडियम सिलिकेट के पार्टिकल्स आपस में बाइंड भी तो होने चाहिए ना. सो बाइंडर इट बाइंड्स द सोडियम सिलिकेट्स टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, रोटी बनाने के लिए आटा के अंदर हम पानी डालते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हम रोटी बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आटा भी रहता है, पानी भी रहता है. सिमिलरली हम बोलते हैं कि हम फ्लक्स बना रहे हैं, उसके अंदर सोडियम सिलिकेट भी रहता है और बाइंडर भी रहता है. ये है. और सर हम लोग डीसी में सोडियम सिलिकेट क्यों प्रेफर करते हैं और एसी में क्यों पोटेशियम सिलिकेट? ये डीसी के अंदर जो आर्क है उसको मेंटेन करने में ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता. जो पोटेशियम सिलिकेट है उसका एक नेचर ये है कि थोड़ा जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड होता है ना, आर्क स्टेबिलिटी में हेल्प करता है. तो टाइटेनियम, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो बहुत आसानी से, ऐसा क्यों है ये नहीं पता मेरे को, शायद उसके कुछ ऑर्बिटल से कुछ इसका रिलेशन है, उसका जो एसपीडीएफ जो स्ट्रक्चर है उससे कुछ रिलेशन है. बेसिकली होता ये है कि जो पोटेशियम है वो आर्क की स्टेबिलिटी मेंटेन करने में थोड़ी हेल्प करता है, सिमिलर टू टाइटेनियम. दैट्स व्हाई एसी के अंदर, क्योंकि आर्क का जो पोलैरिटी वो स्विच होता रहेगा ना हर एक हाफ साइकिल में, तो वहां पोटेशियम सिलिकेट यूज करेंगे तो आर्क थोड़ा स्टेबल रहेगा. अब पोटेशियम आर्क को स्टेबल कैसे करता है यार, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इस पे थोड़ा सा पढ़ के देखना है, मैं भी देखूंगा ये पढ़. और सर सोडियम सर बहुत फास्ट सर आयोनाइज हो जाता है सर. सोडियम फास्ट आयोनाइज हो जाता है? अच्छा सर सोडियम सर आयोनाइज हो जाता है सर, इसलिए सर डायरेक्ट सर मतलब सर आयोनाइज पोटेंशियल उसका कम रहता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी मतलब वो करता है तो आर्क को स्टेबल रखता है. ये अच्छा सोडियम, हाँ सर, उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है ना, कम होता है. अच्छा 281 वाला स्ट्रक्चर है उसका. अच्छा हाँ सर, ये सोडियम पोटेशियम जितने भी हो गए सर, इसलिए इनको आर्क स्टेबलाइजर्स की तरह स्टेबलाइजर्स में यूज करते हैं ना. सही है. और सर हमें किस वक्त कौन सा प्रोसेस उठाना है तो वो उस प्रोसेस का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हमको पता चलता है? अगर हमको ये देखना है कि हमको कौन सा प्रोसेस उठाना है तो सबसे बड़ी चीज जो देखना होता है वो होता है पैसा कितना है हमारे पास, और दूसरी बात कि हमको कितना वेल्ड करना है. तो ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है. मैंने बताया था ना कि वेल्डिंग एक ऐसा है कि किसी से कुछ भी कर लो, लेकिन देखना है कि हमारा बजट कितना है, और दूसरा फिर डिपेंड करता है एलिमेंट्स के ऊपर. फॉर एग्जांपल, अगर हमको एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करनी है तो ऐसे में एल्यूमिनियम कभी भी वेल्ड हो नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा. एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए हमको GMAW ही लेना पड़ेगा, पैसा हो चाहे ना हो. पैसा नहीं है तो मत करो एल्यूमिनियम की वेल्डिंग. करनी तो GMAW से करना है या GTAW से करना है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, इसका मैं वन वर्ड आंसर कैसे दूं.
लेकिन इसके जो कोड्स होते हैं, ASW के कोड्स हैं, ASTM हैंडबुक के भी कोड्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम शुरू करते हैं मटेरियल से। हमारे पास मटेरियल क्या है, हमको जॉइंट कैसा चाहिए, पहला तो ये है, उससे हमको पता लग जाता है कि हमको ये प्रोसेस हमारे लिए फिजिबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोर देन वन वेल्डिंग इज फिजिबल। वंस वी फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग्स आर फिजिबल, देन वी सी द कॉस्ट, अब पैसा कितना है और कौन सा वेल्डिंग हम कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। और सर पोलैरिटी के ऊपर कुछ डिपेंड करता है क्या? पोलैरिटी के ऊपर प्रॉपर्टीज डिपेंड तो करता है, लेकिन पोलैरिटी हमारे हाथ में होता है। तो जब तुम हैंडबुक का कोई कोड देखोगे तो वहां पे तुमको बता के रखेगा वो। जब अगला क्लास में हम इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे ना, वहां पे होएगा कि इलेक्ट्रोड में भी बता के रखता है कि इस इलेक्ट्रोड को हमेशा रिवर्स में यूज करना है या इसको हमेशा स्ट्रेट पोलैरिटी में यूज करना है। डेफिनेटली पोलैरिटी से फर्क पड़ता है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर इसलिए नहीं है कि एक बार वेल्डिंग किया, देखा गलत हो गया तो पोलैरिटी रिवर्स करके कर लो। ये हमारे हाथ में होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम इलेक्ट्रोड गलत उठा लोगे तो बहुत बाद में पता लगेगा, और अगर बिना नुकसान के पता लग गया तो अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फेलियर होने के बाद ही पता लगता है, कुछ टूट जाता है फिर पता लगता है अरे गलत हो गया था। ठीक है, वैसा नहीं करना, कोड्स देख के फिर फॉलो करते हुए चलना आगे। ओके। और बोलो बाकी लोग, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत जो पढ़ा रहा हूं मैं? यस सर, आ रहा है। क्लासरूम जैसा नहीं है यार, लेकिन अब क्या है, क्लासरूम में इतना फोटो वोटो भी थोड़ी दिखाई देता था। थोड़ा उस हिसाब से देखो, पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो, ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव्स। चलो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास खत्म करें आज का। यस सर। जी सर। जी सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीक हम लोग इलेक्ट्रोड नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक नहीं, मतलब ये परसों फ्राइडे को 11 बजे का लेक्चर है, तो 11:40 का लेक्चर होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोड नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहाँ पे। तो आप लोगों को खुद कुछ पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, एज सच कॉपी किताब लेकर आना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ना उसके बाद में, तब जरूरत पड़ेगा। एक सिंपल सा ही करके देखेंगे कल, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। স্যার এই ছবিগুলো এই ছবিগুলো হ্যাঁ স্যার পিপিটিটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি, হিন্দি या इंग्लिश में बोलते हैं। पीपीटी आई विल अपलोड, जी 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 ऑल ऑफ यू कैन एक्सेस। सर और नोट्स भी है सर। नोट्स इसमें तो कोई नोट्स है नहीं यार, ये तो रिकैप ही है, इसमें तो क्या ही नोट्स हैं। आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें देखना पीपीटी में ही नोट्स वाला काम भी हो जाएगा तुम्हारा। पीपीटी मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बनाया है कि मतलब पीपीटी देख के भी समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ। और कुछ अगर जरूरत पड़ेगा तो बताना मेरे को कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, फिर देख लेंगे। अगर नोट्स चाहिए होगा तब बना लेंगे उसको। सर एसएडब्ल्यू का एक प्रैक्टिकल अप्लायंस क्या होगा सर? किसका? एसएडब्ल्यू का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एसएडब्ल्यू का? हाँ एसएडब्ल्यू का बहुत सारा है यार। जब भी तुम्हारा प्लेट थिकनेस 10 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाता है तो उसको फिर एमएडब्ल्यू या जीएमएडब्ल्यू से करना प्रेफरेबल नहीं रहता उसके। सर अगर पाइप का वेल्डिंग करना है, पाइप और सिलेंडर का, तो एसएडब्ल्यू और जीएमएडब्ल्यू में कौन सा प्रेफर करना चाहिए? डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा सिलेंडर कैसा है, तुम्हारा सिलेंडर का वॉल का थिकनेस कितना है। अगर सिलेंडर वॉल का थिकनेस एलपीजी 10 मिलीमीटर से अगर, हाँ बोलो, एलपीजी सिलेंडर अगर होगा, एलपीजी का सिलेंडर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जीएमएडब्ल्यू से वेल्ड होता है। लेकिन एसएडब्ल्यू से भी कर सकते हो, लेकिन मतलब ओवरकिल हो जाएगा वो, छोटे काम के लिए बड़ा चीज यूज करना जैसा हो जाता है। ऐसे एलपीजी का सिलेंडर जो मैन्युफैक्चर होता है तो सील करने के लिए जीएमडब्ल्यू यूज कर सकते हैं, अगर अच्छे से यूज कर रहे हो जीएमडब्ल्यू को। लेकिन जब गैस के जो पाइपलाइंस बिछाते हैं, जब जमीन के अंदर पाइप का थिकनेस ज्यादा होता है, तब जीएमडब्ल्यू यूज करना फिजिबल नहीं है। उस केस में हम पाइप वेल्डिंग के लिए एसएडब्ल्यू यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ एसएडब्ल्यू, पाइप वेल्डिंग। ओके सर। यानी कि पतला पाइप लेकर आ गए और बोलते वेल्ड करो। सर एक क्वेश्चन था कि सर बहुत सारा प्रोसेस है जो रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे SMAW, GTAW और ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग जो होता है। तो सर अगर हमको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए कि एल्युमिनियम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगल ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? जीएमडब्ल्यू। सेकंड ऑप्शन GTAW, और उसके बाद एक मिनट नोट कर लेते हैं सर। तो हाँ बोलो सर। अब सर फर्स्ट ऑप्शन GMAW,
फर्स्ट ऑप्शन GMAW, सेकंड ऑप्शन GTAW। यस सर। और उसके बाद अगर कर रहे हो तो मतलब मजबूरी में कर रहे हो, फिर तो कुछ भी कर लो। प्रोसेस में अगर कंट्रोल है हो जाएगा अच्छा, अगर प्रोसेस में Yes, sir. कंट्रोल नहीं है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स अगर GMAW भी यूज कर रहे हो तो प्रोसेस को तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन क्या है कि वहां पे थोड़ा इजीली हो सकता है। एक मोबाइल कैथोड स्पॉट पढ़ाया था मैंने क्लास में, याद होगा किसी को। GMAW के अंदर क्या है कि मोबाइल कैथोड स्पॉट अगर यूज कर लोगे रिवर्स पोलैरिटी के साथ Yes, sir. तो सब अच्छा हो जाएगा। सर और SMA-W से नहीं होगा अच्छा सर? हो सकता है यार, क्यों नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि पैरामीटर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर बहुत Yes, sir. क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन करने के तुरंत बाद ही SMA-W करना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, Okay, thank you, sir. चलो और कोई। सर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा हीट अफेक्टेड जोन किसमें होता है? सबसे ज्यादा हीट अफेक्टेड जोन HZ। सबसे ज्यादा HZ किस में होता है? सबसे ज्यादा HZ होता है तुम्हारा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में। अच्छा, उसके बाद और अच्छा देख, HZ ऐसा ये क्वेश्चन ना थोड़ा ऐसा है यार, इसको मतलब ठीक से आंसर देना मुश्किल है, लेकिन अफेक्टेड जोन फॉर द सेम हीट इनपुट हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम दोनों में 50 जूल दे रहे हैं, अब किस में हीट अफेक्टेड जोन ज्यादा होगा। लेकिन ये कंपैरिजन गलत है ना, क्योंकि SMA-W में जो एनर्जी हीट इनपुट है हमारा कम होता है, ESW में हमारा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में हीट इनपुट बहुत ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उस केस में हीट अफेक्टेड जोन ज्यादा होगा। तो इसको कंपेयर कर पाना तो इस तरीके से मतलब फेयर नहीं है कंपेयर करना। इज लाइक कंपेयरिंग कि रॉजर फेडरर अच्छा प्लेयर है कि सचिन तेंदुलकर अच्छा प्लेयर है, कैसे कंपेयर करेंगे? दोनों का अलग अलग है, तो कंपेयर करना फेयर नहीं है, क्योंकि दोनों हीट इफेक्टेड जोन अक्रॉस द वेल्डिंग कंपेयर कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर एज एन आंसर पूछ रहे हो कि हम इक्वल हीट इनपुट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इक्वल हीट इनपुट अगर दे रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में ज्यादा होगा। जितना हीट तुम सबमर्ज्ड आर्क उसमें दे रहे हो, SMA-W में दे रहे हो, उतना हीट इनपुट अगर तुम इलेक्ट्रो स्लैग में दोगे तो वेल्डिंग ही नहीं होगा, हीट इफेक्टेड जोन आएगा कहाँ से? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है यार। ये इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है तो उससे ये पूछना कि क्या चीज मैं कांस्टेंट मानूं, क्या मैं ये मानूं कि हीट सब में बराबर जा रहा है? अगर बराबर जा रहा है तो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में सबसे ज्यादा हीट जाता है। जितने हीट में इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में वेल्डिंग होगी, उतने हीट में SMA-W का पावर सप्लाई झेल भी पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग बहुत ही थिक प्लेट्स की वेल्डिंग के लिए यूज होता है। बहुत ही थिक मतलब 50 मिलीमीटर से ऊपर। तो डिपेंड करता है ना, उसको हम कंपेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस तरीके से। ओके ठीक है, और कोई? सर एक बार शॉर्ट में वो मोबाइल कैथोड स्पॉट एक बार रिपीट कीजिए ना। यार अगली क्लास में कर दूं यार, क्योंकि मेरे को थोड़ा और भी लेक्चर प्रिपेयर करना है। मोबाइल कैथोड स्पॉट में बता दूंगा, डायग्राम के साथ बता दूंगा, ऐसे ओरल बताने में मुश्किल होएगा। अगली क्लास में मैं डायग्राम दिखा के फिर बता दूंगा मोबाइल कैथोड स्पॉट, चलेगा ये? ओके ओके ठीक है, चलो और कोई? सर GTAW में ऑटोमेशन करना क्या प्रॉब्लम होगा? ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है ऑटोमेशन करने में। लेकिन GTAW नॉर्मली उसका जो पावर सोर्स होता है ना GTAW का, वो ऑटोमेशन के लिए उतना फिजिबल नहीं होता। ऑटोमेशन के लिए हमको कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स चाहिए होता है, तो GTAW को कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स से कर पाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स का जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है वो कम होता है ना। और GTAW में क्या है कि आर्क को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही हाई वोल्टेज देना पड़ता है स्टार्टिंग में। वो हाई वोल्टेज जो होता है वो तुम्हारा ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ही मिलता है। इस वजह से GTAW को ऑटोमेशन कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत है।